everybody, welcome back to my channel. So in this video we are going to do class 6 chapter 2 components of food part 2. So I have completed part 1 and if you have not seen, the link is in the description. You can go and see from there. So now let's start with our part 2. So now our next nutrient or next component is protein. Okay, so I have completed carbohydrate and now we will deal into with protein. So what are protein? It is known as body-building nutrient. Parts of our body like hair, skin, nails are made up of protein. So what is protein? First of all, protein is a body-building nutrient. It builds our body, it helps in our growth and development. Okay, so that is why it is called as body-building nutrient. Okay, and the next is parts of our body like our hair, our skin, our nails are made up of protein. तो हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं प्रोटीन के बने होते हैं. ओके, इसीलिए हम इसे बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट. ओके, सो दिस इज आवर डेफिनेशन, दिस पॉइंट. ओके, सो नाउ वी विल डील विद फंक्शंस. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन? सो द फर्स्ट फंक्शन इज इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, व्हिच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो. ये हमारी ग्रोथ में मदद करता है. इट हेल्प्स इन आवर ग्रोथ. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज. तो इसका काम क्या है? द फंक्शन इज टू रिपेयर बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज. सो आई विल टेल व्हाट इज सेल्स एंड व्हाट इज टिश्यू. आई हैव टेल यू व्हाट इज सेल. इट इज अ यूनिट. इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट फ्रॉम विच आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ. ठीक है, सेल क्या एक बहुत ही छोटी यूनिट होती है जिससे हमारी बॉडी बनी होती है. और जब बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं, व्हेन मेनी सेल कंबाइन दे टुगेदर फॉर्म टिश्यू. तो क्या होता है, जो हम अगर ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो जो हमारे बॉडी में खराब सेल्स हो जाते हैं या टिश्यू हो जाते हैं, सो दे रिपेयर. वो धीरे धीरे रिपेयर हो जाते हैं प्रोटीन अगर हम खाते हैं तो. ठीक है, तो ये क्या करता है? ये रिपेयर करता है बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज को. ओके, सो आई होप द सेकंड पॉइंट इज क्लियर. द थर्ड पॉइंट इज as it helps in growth and repair our body, food containing proteins are called body building food. तो हमें पता चल गया कि it helps in repair, it helps to repair and growth. Okay, so now ऐसे फूड जिनके अंदर प्रोटीन पाए जाए उन्हें हम कहेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग क्या है? न्यूट्रिएंट है. एंड द फूड विच विल कंटेन प्रोटीन्स इन इट, दे विल बी टर्म्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड. Okay, I hope these 3 points are clear. What were the points? Protein helps in growth, it helps in repairing body cells and tissues, and the food containing proteins in them are known as body building food. Okay, till here I hope you are clear. The next one is sources. What are the sources? There are two sources. First one is plants and second one is animals. We get protein from two sources, which are plants, and the next one is animals. Okay, so from the plant side we get pulses, bees, rajma, chana, soya bean. These all are the some sources which we get from the plant side. Okay, and the sources of animal are eggs, cheese, fish, chicken, milk. These are the example of protein sources from animal side. Okay, so I hope the sources are clear to you all. Now next one is requirement. How much do we require protein? So see, requirement of protein vary with age. तो सब लोगों को सेम प्रोटीन नहीं चाहिए होता. It varies with age. मतलब growing children needs more protein. Here I have written growing children require more protein as compared to adults. And then average adult needs 50 to 60 gram of protein. So it varies with age. ठीक है, मैं एक बार वापस बता देती हूँ. Adult needs 50 to 60 grams of protein. Growing children need more protein as compared to adults. तो ग्रोइंग चिल्ड्रन को ज्यादा प्रोटीन चाहिए होगा एडल्ट के कंपेयर में, क्योंकि वो ग्रो करते हैं तो दे ग्रोथ. दैट्स व्हाई दे नीड मोर प्रोटीन फॉर देयर ग्रोथ. ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज डिफिशियंसी. सो व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट ईट प्रोटीन? अगर हम नहीं खाएंगे, अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, सो व्हाट विल हैपन? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन. जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं अगर वो लोग प्रोटीन ना लें, so what will happen? It will lead to stunt growth and mental retardation. So I will tell what is stunted growth and mental retardation. Stunted growth मतलब हुआ कि आप जिस एज के हो उस हिसाब से आपकी हाइट बहुत छोटी है. Your height is very small as compared to your age. ठीक है, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है. So that is called stunted growth. Okay, and what is mental retardation? Mental retardation is that you cannot adapt to your environment.
इन्वायरमेंट, आप अपने इन्वायरमेंट से अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, मेंटली कोई इशू है. ओके, so it could lead to stunted growth and mental retardation. So I hope these two terms are clear to you all. And the next one is in adult. अगर adults में deficiency हो, then it could lead to dry and rough hair, graying and falling of hair, unhealthy skin and other problems. So dry and I'm sorry, यहाँ पे hair नहीं, यहाँ पे skin आएगा. तो dry and rough skin हो जाएगा, मतलब आपकी जो skin होगी वो dry और rough पड़ जाएगी. ठीक है, यहाँ और हेयर के साथ क्या होगा, ग्रेइंग एंड फॉलिंग ऑफ हेयर. तो इफ यू हैव डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन बॉडी इन एडल्ट्स, देन इट कुड लीड टू ग्रेइंग, मतलब बाल जो है ग्रे होने लगेंगे, एंड फॉलिंग, और बाल फॉल होते हैं, गिरते हैं फिर. ठीक है, तो ये होगा एडल्ट्स में. एंड द लास्ट वन इज अनहेल्दी स्किन, और आपकी स्किन भी एकदम अनहेल्दी हो जाएगी, जो मैंने यहाँ भी बोला, ड्राई एंड रफ स्किन आपकी हो जाएगी एकदम. ठीक है, तो अनहेल्दी स्किन हो जाएगी एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं. ओके, so I hope deficiency is clear. So यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, this point is not in your syllabus but still you need to know this. Okay, proteins are not digested as it is in our body. क्या मतलब प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में as it is डाइजेस्ट नहीं होता है. ये क्या होता है, फर्स्ट ये पहले ब्रोकन डाउन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से. इन आवर बॉडी द डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर, सो दैट डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक द प्रोटीन एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड. दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमीनो एसिड्स. Okay, हमारी बॉडी में when the protein goes inside our body, then the digestive system break down that protein and then it is broken down into amino acid. Okay, उसके बाद वो further blood में absorb हो जाता है और वो फिर उसका खून बनता है. Okay, and then it is utilized for our growth. So this you need to know. Proteins जो है as it is digest नहीं होते, they are firstly broken down and converted into amino acid and then it is further absorbed in blood and then utilized. Okay, so this point I hope is clear to you all. So I have explained all of this. Now you can take a screenshot if you want. I'll count till 5, 5, 4, 3, 2 and 1. So I hope you have taken. So now we will move to our next nutrient, that will be fats. Okay. So now we will deal with fats. So I have completed carbohydrate and protein. Now let's move through fats. Okay, so what is fats? Known as energy banks of our body, as it is stored in our body for future use. So I will tell what happens. Fat acts like a bank in our body, because what we do, we save money in a bank. In the same way, in our body, fats are saved. We eat fat and the leftover fat is stored in our body for future use. When we need fat, when we need energy, so that fat is converted into energy and then that fat is utilized by our body. I will explain in Hindi also. क्या होता है कि हमारी बॉडी में हम फैट्स जब लेते हैं तो जो फैट्स बच जाते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. ओके, एंड देन दैट स्टोर फैट को, जो फैट स्टोर हो जाता है, बाद में जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो वो फैट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम उस एनर्जी का यूज करके कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं. वी परफॉर्म एनी फंक्शन. ओके, सो आई होप दिस डेफिनेशन पॉइंट इज क्लियर. द नेक्स्ट वन इज फंक्शंस. सो लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शन. When we are short of energy, our body uses the stored fat. तो जब हमें एनर्जी चाहिए होती है, so then we use that stored fat. The stored fat is converted into energy and then utilized by our body. Okay, this I have told you. Fats are stored in our body and help us to be warm. So what happens? Fats is stored skin by skin on our body. ठीक है, layer by layer skin के ऊपर वो जमा होता चला जाता है. Okay, and then when you feel cold, then because of the fat stored in your body, you will feel warm. Because क्या होगा, आपकी skin thick होगी, and if your skin is thick, then you will feel warm from inside. Okay, so that's why if you are fatty, then you will feel warm as compared to other ones. Okay, so I hope the second point is clear. The third point is they act as a shock absorber and protect us from injuries. So I will tell you what is the meaning of shock absorber. होता क्या है, if you get any injury, so it act as a shock absorber. Shock absorber क्या करेगा, मतलब ये आपको internal injury से, it will protect you from internal injury. Okay,
इंटरनल कोई फ्रैक्चर ना आ जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इंटरनली, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट. ओके, सो फैट्स का फंक्शन ये भी होता है कि इट विल एक्ट लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर. इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एन इंटरनल इंजरी और इंटरनल फ्रैक्चर. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. The last point is they are also required for absorption of certain vitamins in our body. तो क्या होता है हमारी बॉडी में we feel the fats absorb certain vitamins which are very essential for our growth and development. So that vitamins are absorbed by the fat containing food and then it is utilized in our body. Okay, so I hope these 4 points are clear to you all. If any doubt then you can tell in the comment section. Then the next one is sources. Okay, so what are the sources? It is coconut, dark chocolate, avocado, dry fruits, cheese, butter, ghee, oil. These all are the sources of fats. Okay, from which we get fat and then we utilize it for our energy and more functions. Okay, and the next one is requirement. So what is requirement? First requirement is an average adult requires 70 gram of fats every day. तो एक एवरेज अडल्ट को कितना फैट्स चाहिए? दे नीड 70 grams of fats every day. Okay, 70 grams of fats every day. Approx 25% of your total calories must include fats. So I have told you the meaning of calorie. Calorie is a unit to measure energy. It is a unit to measure energy. Okay, so approx 25% of energy you have to get from fats. आपके पूरे डाइट में से जो आपको एनर्जी मिलनी चाहिए वो 25% आपको अपने फैट से मिलनी चाहिए. ओके, आई हैव टोल्ड इन कार्बोहाइड्रेट आपको 45 to 65% एनर्जी अपने कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए. इन द सेम वे यू नीड टू गेट 25% ऑफ योर टोटल कैलोरीज फ्रॉम द फैट्स पार्ट. ओके, आई होप दिस रिक्वायरमेंट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज एक्सेस एंड डिफिशियंसी. सो व्हाट विल हैपन इफ यू ईट एक्सेस फैट? मतलब ज्यादा खा लोगे. ओके, आपको क्या करना चाहिए? आपको एक लिमिटेड अमाउंट में फैट खाना चाहिए. बट व्हाट विल हैपन इफ यू ईट मोर फैट? ओके, सो व्हाट विल हैपन? ईटिंग एक्सेस फैट कुड लीड टू ओबेसिटी एंड इट कुड आल्सो लीड टू ब्लड प्रेशर. सो ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा. ओके, यू विल गेट फैट डे बाय डे, यू विल गेट फैट क्योंकि व्हाट विल हैपन आपकी स्किन के ऊपर लेयर बाय लेयर द फैट विल स्टार्टेड growing and what will happen after some day you will become very fatty. Okay, so it will lead to obesity. आप मोटापा हो जाएगा. Okay, and what is the meaning of blood pressure? क्या होता है? If you eat more fat, then what will happen? जो फैट होता है वो आपके जो ब्लड वेसल होता है it freezes in your blood vessel. मतलब जम जाता है चारों ओर. Okay, and because of that आपका जो ब्लड वेसल होता है it becomes very narrow and the blood cannot pass through it. अच्छे से नहीं जा पाता है. So what will happen? आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा क्योंकि क्या होगा? आप ब्लड अच्छे से जा नहीं पाएगा बट ब्लड का फ्लो रुक रुक के चलेगा. सो ये जो है आपको हार्ट अटैक आ सकता है इसके कारण और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो यू हैव टू ईट फैट्स बट नॉट मोर. ओके, एंड इफ यू ईट लेस फैट, डिफिशियंसी से क्या होगा? इट विल लीड टू टायर्डनेस, वीकनेस एंड वेट लॉस एंड ड्राई स्किन. इफ यू विल नॉट ईट फैट देन इट कुड लीड टू वीकनेस होगा, आपको टायर्ड फील होगा, वेट लॉस भी होगा और स्किन जो है इट विल बिकम ड्राई स्किन. ओके, स्किन रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स होगी. Okay, so I hope this much is clear to you all. And if you want to take a screenshot, you can take. I will again count till 5, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, so I hope you have taken